Shekhawati, Haroti. The Shekhawati dialect is a dialect of Rajasthani language spoken primarily in the Shekhawati region of Rajasthan in northwestern India. As a dialect of Western Indo-Aryan language Rajasthani, it follows an SOV or subject-object-verb structure and acts as a dialect bridge between Western Rajasthani, Marwari, Eastern Rajasthani, Dundhari, and Southern Rajasthani, Malvi. Shekhawati is spoken in districts like Churu, Junjunu, Sikar, and parts of Bikaner like Sridungangar, and parts of Nagaur like Ladnu. While over 6.85 million people speak Shekhawati in India per 2011 census, its usage is declining due to urbanization, inferiority complex, and imposition of Hindi upon Rajasthan. Since Rajasthani language isn't used for administration, it doesn't offer jobs, and therefore, parents prefer to teach Hindi to kids. Shekhawati dialect is known as the musical dialect of Rajasthani, as most Rajasthani songs, including folk songs, are in this dialect. Haroti is a dialect of the Rajasthani language, spoken primarily in the Haroti region of Rajasthan in northwestern India. As a dialect of the Western Indo-Aryan language Rajasthani, it follows an SOV or subject-object-verb structure, and according to some linguists, serves as a dialect bridge between Mewari, a Rajasthani dialect, and Gujarati. Haroti is often considered a subdialect of Dundhari, but it has its own unique identity and covers a vast region. It is spoken in districts like Kota, Bundi, Baran, parts of Jhalawar, and parts of Madhya Pradesh, such as the Shahpur district. With over 5.29 million speak Haroti in India, according to the 2011 census, its usage is declining due to urbanization, a sense of inferiority, and a shift towards the Hindi language. Since Rajasthani is not used for administration and does not offer job opportunities, parents prefer to teach Hindi to their children. एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, 10। 10। बायरो और सूरज आपसी में बहस कर रहा हा। दोनों ही वो दावो कर रहा हा कि मैं सें ताकतवर हूँ। फिर बाने एक जातरू देखियो जोयो जको आपका कोर्ट में लिपटे थको आगे बढ़िया जा रहे हो। हवा और सूरज बहस कर रहा छा। दोनों यो दावो कर रहा छा कि मुंह सबसे ताकतवर छू। फिर वाने एक जात्री के ताई देखियो जो अपना कोर्ट में लिपट्यो तको आगे बढ़तो जा रहे छो। बे बात माथे सहमत होया कि जको भी जातरू से जातरू पहली कोर्ट उतरासी वो ही बेसी ताकतवर मान्यो जासी। वे ही बात पे सहमत होया कि जो भी ई जात्री सु पहली कोर्ट उतरवाओगो वही बत्तो ताकतवर मान्यो जाओगो। जना बायरो आपका सगला जोर से जोरू चालबा लाग्यो पण वो जतो बेगो चालतो जातरू भी आपका कोर्ट ने बतो ही कस्या जातो। पछे बायरो हार मान ली कारण के वो भी जातरू को कोर्ट नहीं उतरा सक्यो। तो बायरो अपना पूरी जोर सु चालबा लाग्यो पण जतरो तेज चाले जात्री भी अपना कोर्ट ने वतरो ही कसतो जावे। फिर अंत में हवा ने हार मान ली क्योंकि वह वो जात्री सु कोर्ट न उतरा सकी। जना सूरज आपका सगला जोर से जोरू चिमकण लाग्यो और जिया ही जातरू ने लाए लागी बिने आपको कोर्ट उतार लियो। पछे बायरा ने भी माननो पड़ियो कि सूरज बेसी ताकतवर है। पचे सूरज अपना पूरा जोर सु चमकबा लाग्यो और जैसे ही जात्री ने गर्मी लगी उन्हें अपनो कोट उतार लियो। इसलिए फिर हवा ने भी माननी पड़ियो कि सूरज बत्तो ताकतवर छे।